So today we will see another set of few questions. So actually we are dealing with the UPSC examination 2024. Okay, and the most problem with this prelims examination is we don't practice good questions. Okay, and that's why we have to face the failure after working very hard. So you can go to the link given below and you can solve many more questions. We have provided you the link. You can go to our website directly and you can solve. Okay, the first question talks about the recently the Turkey has been achieved the maturity level 3. Okay, now this is a benchmark tool. It's a global benchmark tool which has been provided. First of all, we should know by which organization. Okay, in medicines and vaccines. So we can guess, and it's World Health Organization. We can guess the answer by, because this is only the global health organization. Okay, so this is what you have to understand. Now the highest level maturity level is a 4. Maturity level 4 is the highest level and is achieved by a regulatory system operating at an advanced level of performance. So there are actually one, two, three, four types of this level, and it has been recently by Turkey. So this is important for. Okay, now again this important because now India का पता करना है, इंडिया कौन से लेवल पे है. Okay, this is again very important that India कौन से लेवल पे है, and we found that answer is be only two. मतलब इन तीनों में से कोई एक गलत है, and that is the statement 3 is wrong. So if you go to the solution, we see here India कौन से लेवल पे, आप देखो यहाँ पे India at is ML3. Okay, this is very very important. India has been as a regulatory authority यहाँ पे CDSCO, and the ML3 is in this is, and the year of announcement 2017 में ही ML3 पे है. Singapore and Korea are under the maturity level 4. Okay, now this you should be remembering. तो ये एक important question है, just remember. Second important question is hand in hand in investment forum 2023. Is in forums को you should only know how it is related. Okay, ये नहीं पूछेंगे आपसे because very less chance they will ask you इस फोरम के अंदर क्या है, बट एटलीस्ट यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि ये फोरम किस चीज़ से रिलेटेड है. रिलेशन यू शुड ऑलवेज नो, बिकॉज दे कैन आस्क यू रिपोर्ट्स, they can ask you submits and which is related to which and not. So you should be remembering. So the answer is investment in agriculture sector and remove hunger. So this is what another question. Up third question is your मैप क्वेश्चन, और आप देखो यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. इट टॉक्स अबाउट द टू प्लेसेस द ब्राज़ीविले एंड द रफा. ओके, तो आपको रीजन्स इन न्यूज दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो अगेन यू सी हियर इट्स 3-4 स्टेटमेंट. आंसर इज डी. तो इट्स नाम पे मत जाओ आपकी. ब्राज़ीविले इज इन ब्राज़ील, ऐसे नहीं जाना है. रफा इज इन द गजा का सदर्न पार्ट पे. देखो आप गाजा सिटी, गाजा स्ट्रिप जो है उसका सदर्न पार्ट पे रफा. दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, वेरी मच इन न्यूज. सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस. ओके, नाउ सेकंड इज ब्राज़ीविले, इट्स इन कॉन्गो. इसका कैपिटल है ये. ओके, सो इट्स नॉट लाइक सिंपल कोई सिटी है, इट्स ए कैपिटल ऑफ कॉन्गो. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो कितना कॉन्सेप्ट है, आप नहीं जानते होगे. यू मस्ट नॉट बी नोइंग these statements, but these are very very important statements. The presidential notification specifying scheduled tribes cannot be amended by the parliament. This is wrong statement. As per the current order, only the marginalized group community that profess Hinduism, Sikhism, Buddhism can be the member of scheduled caste. तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है. ये सही है या other religious can also be termed as scheduled caste. देयर इज नो रिलीजियस बार फॉर बीइंग ट्रीटेड ओबीसी. जैसे शेड्यूल कास्ट में इन्होंने बोला है देयर आर 3 कम्युनिटीज फॉर ओबीसी, दे आर नॉट एनी रिलीजियस, देयर इज नो रिलीजियस बार. तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज इट कैन बी अमेंडेड. आप इधर देखोगे, यू कैन रीड ऑल्सो, बट पॉज करके just try to read. They can be amended. Okay, second statement is correct because as per the constitutional schedule caste order 1950, this is important again. ये छोटी छोटी चीज you should be remembering that
ऑल थ्री आर ओनली कैन बी कंसिडर्ड एज द शेड्यूल कास्ट. मतलब क्रिश्चियन को या फिर आई थिंक मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ग्रुप्स आर effectively barred from being included in the list of scheduled caste. Okay, third statement is correct. There is no religious bar for being treated as OBC. So इसको आपको ध्यान रखना. These are very very important questions. To solve more such questions, go to the link given below और आप उसको complete daily quiz को solve करो. 10 question का set है, आप जाके इसको solve करो and then things will become gradually easy for your prelims examination. Thank you for today and all the best.